Hello and welcome to SIMC Voices. SIMC Voices is an initiative by the students of Symbiosis Institute of Media and Communications, Pune, to bring you the current developments of the city. We are your hosts Payoshi Bisht and Pranav Mathur. In this episode, we bring you stories about Pune's infrastructural developments. Our first story is about the increased number of potholes in Pune during the monsoon season. The problem was so grave that it got the attention of the President of India during a recent visit to the city. Our correspondents Kumar Siddhartha and Bansari Shah unfold the issue to length. President Murmu, in a recent visit to the Pune, wrote a letter to the Pune police raising concern over the bad quality of the street. After monsoon, the city has seen increase in the number of the potholes. This has created a lot of problem for the people who commute on the daily basis. जैसे हम लोग काम पे जाते तो कभी ट्रैफिक में कभी पुलिस वाले नहीं बोल देते इधर है वो है बोलते हैं हम लोग भी देखते हैं ना खड्डे कितने हैं क्या है ट्रैफिक कितने कभी ये लोग बोलते थे हम लोग कर रहे हैं काम तो कर रहे हैं लेकिन दिखावट के लिए कर रहे हैं हाँ पूरा अच्छे से करना चाहिए ना अभी करेंगे कल खराब हो जाएगा क्या फायदा वो काम करके काम करो तो अच्छे से करो थोड़ा दिन टिकना चाहिए थोड़ा साल टिकना चाहिए हाँ लोगों के मन में भी थोड़ा हाँ भाई कर रहे हैं सरकार कुछ तो कर रहे हैं इसकी वजह से आप जनता भी खुश हो जाएंगे चलने वाले भी अच्छे से चलेंगे और इतना एक्सीडेंट भी नहीं होगा। हमने वो जगह जाके देखा था सीपी के साथ हमारे इंस्पेक्शन के वक्त इतने गड्ढे नहीं मिले थे अभी जो पुणे पुलिस ने हमको बताया था वो पैच वर्क और रीसर्फिंग के काम और स्पीड ब्रेकर के बारे में उस काम पे अभी हम वो काम कर रहे हैं अभी। In August, PMC filled around 800 potholes for President's visit. The problem do not solely lie in the pothole but also the levelling of the road. The small bump create problem for the people who commute on the daily basis. The main road have been levelled but gullies are still facing the same problem because of which there is a lot of traffic and congestion for the people. This is Kumar Siddhartha with camera person Bansari Shah signing off. Our next story is on the newly inaugurated Pune's first underground metro line. Our reporters Amita Reggie George and Amruta Avasarala share their insights on their experience. We are here at District Court Metro Station. This is an underground metro station which was inaugurated on 29th September 2024 Sunday by Honorable Prime Minister Narendra Modi virtually. This is the third stage or third phase of metro project in Pune. The first phase is from Vanas to Rambadi and the second phase is from Swargate to PCMC. This project is the first underground metro project which costs up to 1810 crores. मैं पहली बार आ रही हूँ मैं शिवाजी नगर से स्वारगेट तक का सफ़र मैंने आज बिल्कुल कंफर्टेबली 7 to 8 मिनट्स में किया है सो 3 cheers टू पुणे मेट्रो। शिवाजी नगर टू स्वारगेट परसों ही ओपनिंग हुआ तो मैं आज ये रूट से पहली बार आई हूँ और मेट्रो से 9 मिनट में हमारा स्वारगेट तक का सफ़र पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा मेट्रो में। और जब मेट्रो नहीं था तब हमको शिवाजी नगर टू स्वारगेट जाने के लिए आधा घंटा लगता था बीच में सिग्नल और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता था तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है सफ़र करने के लिए। This is the situation of underground Pune Metro. One day after its inaugural, we have found some irregularities in the infrastructure, which is some QR code scanners at the ticket outlets and exits are not functional, and the second one is the X-ray scanner for scanning luggage is not functional at both District Court Station and also Swargate. Apart from this, the passengers talk pretty good about the experience, and currently there are 1.5 lakh passengers for metro each day, and the government is now eyeing to increase the limit to 2 lakh passengers per day. This is Amrita Avasarala reporting for SIMC Voices with cameraman Amita Reggie George signing off. Our next story asks an important question. Is Pune not for pedestrians? The Safe Pune Traffic Management has found 24 footpaths that are in bad shape. Our correspondents Yashaswini and Mannat elaborate more on this from the ground. In Pune, several key roads and footpaths have become a daily hazard for residents. Despite numerous complaints, the situation remains the same on several key roads.
It's a struggle many Pune citizens are all too familiar with. Uneven, broken footpaths like this one, littered with debris, overgrown vegetation, and blocked by street vendors. The situation has become so bad that 24 roads across the city have been flagged as hazardous. पीएमसी का कहना ये है कि ये सब जगह पीएमसी की है, ये सब पार्किंग की जगह है, तो पार्किंग के लिए फुटपाथ में लोगों को चलने के लिए जगह होना चाहिए, ये दुकान के लिए अलाउड नहीं है। पीएमसी का कहना ये है और हम लोगों को भी भाई है तो पीएमसी की जगह है तो हमको भी तो ये समझ में आता है, लेकिन पेट पालने के लिए तो आदमी को कुछ करना पड़ेगा ना, घर परिवार चलाना है तो करना तो पड़ेगा। अब हमारी औकात तो नहीं है कि हम तो रूम ले लेंगे, इसके लिए फुटपाथ वाले हैं हम लोग। Local NGOs like Safe Pune Traffic Movement have been actively campaigning for better pedestrian safety. They have conducted regular footpath audits and have repeatedly raised these issues with the municipal corporation. A couple of months ago, conducted a survey of about 24 randomly chosen footpaths in Pune, and we found that the number of people who are walking as compared to the number of people still walking on the road, varies significantly from place to place. There are some old footpaths where the percentage of people who are walking on a footpath is fairly low, maybe in double digits barely or 20-30% at the most. And there are some footpaths, some of them are new ones, where the percentage is reasonably higher. It may be in 40-50s or maybe even in 80 and 90%. We would expect that when you in a sense PMC builds a new footpath, pretty much everyone there, every pedestrian there should be walking on the footpath and not on the carriageway. If we find that people are still walking on the carriageway, there is something wrong with the design of the footpath itself. Walking is a fundamental right, driving is not. Driving is a privilege. Pune's footpaths are not just inconvenient, they are dangerous. For senior citizens, children and people with mobility issues, these walkways pose a serious risk. In response to these growing concerns, the municipal corporation claims they are aware of the problem and are working yearly to resolve these issues. आम्ही दरवर्षी पुणे महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकातून फुटपाथ दुरुस्ती पण करतो आणि नव्याने पण फुटपाथ करतो. हां, तर फुटपाथच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे आमचे फुटपाथचं काम दरवर्षी. For now, Pune pedestrians remain at the mercy of poorly maintained footpaths. They are waiting for the promises of municipal corporation to materialize. With camera person Mannat Saini, I am Yashaswani Chauhan, reporting for SIMC Voices. Our next story is on the new rehabilitation scheme initiated by the Pune Slum Rehabilitation Authority at the Patil Estate Slum. Reporters Prerna Toshniwal and Disha Tandon tell us more about this. We are at the Patil Estate Slum in Shivaji Nagar near the College of Engineering, Pune. The slum dwellers are living in a lot of uncertainty as the college is reclaiming the land. While they have been promised a rehabilitation, they are worried if the promises will be kept up. कॉलेज बोलते ये हमारी जगह है, तुमको यहाँ बना के देंगे, ऐसे चर्चा चल रहा है। ये कॉलेज बोल रहे हमारी जगह है, कॉलेज क्या बोल रहे आधी जगह हम लेंगे, बिल्डर बोल रहे आधी जगह हम लेंगे, तो हम बना के देंगे। ये अभी सिस्टम हो रहा है। एक ना शिंदे आया था, घर में पानी आया था, वो ऐसा बोल के गया तुमको मैं अच्छी जगह देंगे। जब से अभी चर्चा बस्ती में हो रही है, ऐसे ये उठने वाले 4-6 महीने में घर बाद में तुमको बना के यहाँ देंगे। और अभी उसका निर्णय कुछ बात का निर्णय नहीं हो गया। बवाल चल रही है, ऐसे 6 महीने टूटने वाले हैं, बनने वाले। कोई भी आ रहे जा रहे, कोई बोल रहे इंद्रपाली वाली हमारी जगह है, कोई कारखाने वाले बोल रहे हमारी है, और कोई बोल रहे कारखाना हम तुमको यहाँ बना के देंगे, और कोई बोल रहे हम बना के नहीं देंगे। Earlier, the slum was in news when a fire had broken in the area in 2018. Residents also reflected on how this matter was dealt with. कभी बस्ती जल जाती, कभी कुछ होता इधर, कोई कुछ नहीं करते. Because of lack of help in the past, the residents are not very hopeful about this relocation. क्या बोल रहे किस घर देंगे बोल रहे, अभी इधर एक मेरा लड़के का है, दूसरे का है, तीसरे का है, उधर चौथे का है, तो बोल रहे किस घर देंगे, ऊपर का घर नहीं देंगे बोलते। अब मेरे बच्चे लोग किधर जाएंगे, एक घर में हम नहीं रह सकते सब। One can only hope that the residents are relocated respectfully.
It remains to be seen what Pune Slum Rehabilitation Authority decides on this matter. With camera person Disha Tandon, this is Pranav Mathur reporting for SIMC Voices. Our next story is on the traffic woes faced by commuters in Pune due to expansion of bridge projects in various parts of the city. Reporters Khushi Bhuta and Mahiyar Patel report on the issue. I'm standing here in Vakad, a hotspot for Mumbai-Pune travelers located on the Mumbai-Bangalore bypass. Following the expansion of Chandni Chowk, the area has increased significantly in terms of traffic, causing travelers to wait for hours on it. It has become a huge hassle for travelers traveling every day from several cities including Mumbai, Hyderabad, Goa, Udaipur and Pune itself. क्या है कि जो ऊपर की जो गाड़ी आती है वो नीचे आ रही है, नीचे की जो गाड़ी है ऊपर जा रही है, उधर क्या है इधर ट्रैफिक का कोई सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होता है कि दिक्कत ऊपर के आने वाली नीचे और नीचे के ऊपर, तो सभी उधर से ट्रैफिक जाम होना चालू हो जाता है। और इधर देखो पूरा रोड भी नहीं बना हुआ और ये आपने मेट्रो का काम चालू है, उसकी वजह से तो हमेशा ही ट्रैफिक जाम है। शाम को 5 बजे आओगे ना तो इतनी भीड़ रहती है, बहुत मुश्किल रहती है। क्या 5 के बाद IT सेक्टर वाले भी छूट जाते हैं और लोग भी उधर से आ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। Easy to move from by a two-wheeler, but in four-wheeler or a bus, it takes a lot of time to move by the traffic. So yeah, traffic is there. A lot of traffic is there nowadays. It's crazy. So even if I have to travel for 3-4 kilometers, there is lots of traffic. Yeah, so this is the busiest road. They are coming from the highway, Nagar highway. That's crazy traffic. I think it's gonna take more than 2 hours. I'm just waiting. It is on time. In order to further understand the cause of the long traffic jams on the Mumbai-Bangalore bypass, we spoke to the ex-corporator of Barje, Sachin Dodke. नहीं उसका क्या हुआ है कि पूरी पहले ये जो रोड था, हाँ जी, हाईवे, हाँ जी, वो जो जब एक्विजिशन हुआ उसका 60 मीटर का हुआ, यानी कि 60 मीटर्स का। ओके। और 60 मीटर का जो एक्विजिशन हुआ तो पहले उन्होंने 2 लेनिंग का रोड बनाया। ओके। हाईवे नहीं, 2 लेन का। हाँ, 2 लेन का। हाँ, उसके बाद बनाया 4 लेनिंग। हाँ। तो अभी 2007 के बाद में उन्होंने वो 6 लेनिंग का काम चालू कर दिया। हाँ। और 6 लेनिंग का जब काम किया, हाँ, तब उन्होंने चांदनी चौक का भी प्लानिंग करना चाहिए था, वो नहीं किया था। The union government has identified black spots on this bypass. They are planning on creating 2 new 4-lane bridges to ease the situation for travelers. Travelers hope that this move will be beneficial to them in the future. This is Khushi Bhuta signing off with camera person Mahiyar Patel for Voices with assistance from Ronak Kher and Naisa Srivastav. Our next story is on the rejuvenation project of the Indrayani River amidst the contamination of the river and the various facets and perspectives that flow with it. We have Khushi Maheshwari and Alakshendra Singh to give us more details. Just like Delhi's Yamuna and Bengaluru's Belandur Lake, the Indrayani, which was once praised by saints for its purity, started spewing toxic froth in 2023. Consumes about 200 crore liters of water per day. About 80% of that gets converted into sewage. That's about 160 crore liters of water. And all this water flows untreated or treated, whatever their claim is, but most of it is untreated, directly into the riparian system. This is the size of the problem. And PCMC had set in motion plans of rejuvenation of the river back in 2016. Recently, both the civic bodies have got an environmental clearance to rejuvenate Indrayani. As in you saw that this year we had so much of rainfall, and the entire bank that they are rejuvenating, even that was flooded up to some extent. So these factors are not considered, and that's why it's a bit not a bit actually. It's the project is very unscientific when it comes to the ecology of the river, and yeah, I think it should be reconsidered. And just changing the name won't actually change how it is going to affect the river and us as well. The river embankments are not concrete walls.
It is the stone pitching with mud lining, and it will have the green grass on the slope. So it is going to be a very natural way of strengthening the embankment. So without even hampering the water seepage, and the embankment will be porous in nature. So therefore, temperature rise is not at all a question when we complete this project. And both the banks we are doing heavy plantation on both the banks and making it more green. So after completion of this project, both the banks of the river will be much more greener than what they are today. While the scheme is loaded and ready to be fired, it has remained in the barrel for long. Only time will tell how successful this project is going to prove for the Oxford of the East. This is Khushi Maheshwari with cameraman Alakshendra Singh, reporting from Pune for SIMC Voices. Our next story is on the facilitation of the school supplies to around 49,000 students across Pune under the Direct Benefit Transfer Scheme by Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. We have our reporters Sukhmani Kooner and Vidushi Nautiyal to provide us more information on the same. This year, under the Direct Benefit Transfer Scheme, PCMC has distributed essential school commodities to children. These include bags, raincoats, geometry boxes. And they have been distributed to 49,000 students across 128 schools run by the PMC. Earlier, the municipal corporation used to transfer the money in the parents' bank accounts so they could buy supplies themselves. However, from this year, the corporation has decided to directly provide essential supplies to students. हाँ मैडम, आप पैसे देते थे ना, वही ठीक है, हम सामान अपने मर्जी से ला सकते थे, सॉक्स से बूट सब हम लाते थे, बहुत लेट देते सामान मैडम, ये कोई इसी साल से दिया अपने सामान, अच्छा है लेकिन पूरा नहीं आया मैडम, कलर पेटी नहीं है, नहीं है, वो नहीं, उसमें रेनकोट भी नहीं है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गेल्या वर्षी पण चालू झालं, तर त्यावेळेला काय झालं की विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले आणि पैसे जमा झाल्यावर काय झालं, परिस्थिती लोकांची गरिबीची आहे आणि काहीतरी आधीच कर्ज काढलेले काही लोकांनी, आणि कर्ज काढल्यामुळे काय झालं की पैसे जमा झाले आणि ते आपोआप गेले, त्याच्यावरून कट होऊन गेले. मग काही लोकांनी ते सामान नाही चालू शकले, म्हणजे परिस्थिती गरीब आहे लोकांची. काही लोकांचं असं झालं की त्यावेळेला दिवाळी आली, आणि मग दिवाळीच्या वेळेला काय झालं की लोकांनी ते खर्च करून टाकले दिवाळीच्या ह्याच्यामध्ये, की बाबा पैसेच नाहीत म्हणून खर्च केले. तर त्यावेळेला काय झालं, काही लोकांनी सामान घेतलं, थोड्या मुलांनी घेतलं आणि काहींनी नाही घेतलं. मग यावर्षीचा निर्णय अजून चांगला झाला की म्हणजे आता कसं की एकदा ठेस लागल्यावर माणूस शहाणा होतो की बाबा बरोबर आहे, आयुक्तांचा उद्देश तर खूप चांगला आहे. यावेळेला काय झालं की मुलांना त्यांनी काही लोकांकडे कॉन्ट्रॅक्ट दिलं, काही स्टेशनरीवाल्यांना, आणि स्टेशनरीवाल्यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यामुळं त्यांनी ते डायरेक्ट शाळेत आणून दिलं. आमच्याकडे तर आता जवळजवळ सगळ्या मुलांना साहित्य मिळाले. While the PMC is still facing some challenges in distributing these supplies, the initiative is ultimately beneficial for the students. This is me, Sukhmani Kooner, with camera person Vidushi Nautiyal, signing off for SIMC Voices. Our final story is about housing societies in Pune taking the initiative to install rainwater harvesting systems after dry summers. Our correspondents Garima Sharma and Shrishti Kamal give us a detailed report. Several housing societies in Pune and Pimpri-Chinchwad are mulling to install rainwater harvesting system due to severe shortage of water during summers. मैडम, हमारा रेनवाटर हार्वेस्टिंग कम से कम 10 साल हो गए उसके पहले लगा था, तो 3 रेनवाटर हार्वेस्टिंग है हमारे यहाँ पे, एक गेट पे है, मेन गेट पे, BC के बीच में और एक DE के बीच में. तो इसका फायदा पानी से बहुत हमको हुआ है. पानी पहले बोरिंग का पानी आता नहीं था, बहुत सारे टैंकर मंगवाने पड़ते थे हमको, लेकिन ये जब से लगा है तब से पानी का कोई दिक्कत नहीं आता. हमारे यहाँ पे तीनों बोर अच्छे से चलते हैं और 5वीं में 130 फ्लैट है, उनको पानी का कोई दिक्कत नहीं आता. और जो भी पानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो पिट्स में जाता है, तो इसलिए वो सबको फायदा है. अगर सब सोसाइटी ने किया तो सब एरिया को वो फायदा है. ये रेन वाटर के हैं, इसमें मैं इधर लगभग मुझे 2-2.5 साल हो गया काम करते हुए. ये अपने आने से पहले ही यूज होता था. इससे कि हमें पानी का लाभ होता है, ये बारिश होता है, इसका पानी हमें बोर में फ़ायदा करता है, बोर पे जाता है, बोर से हमें
ऊपर हमारा मोटर ज़्यादा पानी देता। The pipelines were deployed 5 to 6 years ago and is 480 to 500 feet deep, as informed by a resident who wanted to stay anonymous. The bore stores rainwater from all the 6 buildings in Dwarka Sai Heritage, which are connected to it through pipelines. Till the summer of 2024, out of about 22,500 housing societies and 15,000 apartments, only 20 to 25% of them had rainwater harvesting systems. This is Shishti Kamal, the camera person Garima Sharma, reporting for SIMC Voices. With this, we reach the end of the episode of Voices. This is Payoshi Bisht. And this is Pranav Mathur. As your hosts, signing off.